हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्टिकल 52। हु पार्टिसिपेट्स इन द presidential election? So option A is the right answer. Elected member of both houses of the parliament. What qualifications should be to become a president? 35 years of age. He should be eligible to be elected as a member of Rajya Sabha. Must be an Indian citizen. Option only A and C. So only A and C is the right answer. 35 years of age and must be an Indian citizen. Which of the following statement is wrong? Elected and nominated member of a state legislative assembly participate in the presidential election. The Union Executive includes the President, Vice President, Prime Minister, Attorney General of India. Impeachment may be initiated against the President for breach of Constitution. Article 56 envisages the tenure of President. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग is not matched? Correct. Article 54 presidential election, Article 55 manner of presidential election, Article 60 procedure for impeachment of the president, Article 123 power of the president to promulgate ordinance. इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। Which article of Indian Constitution envisages that there shall be an Attorney General of India? So इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आर्टिकल 76। How can the post of president be vacant on expiry of his tenure by his resignation only on the commencement of impeachment in Rajya Sabha? Only A and B. So इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, ओनली ए एंड बी, ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर बाय हिज रेजिग्नेशन। Which of the following statements is not correct? President is the head of military forces of India. President can appoint a commission to investigate into the condition of SC/ST. Parliament can declare any area as a scheduled area. President of India choose the chairman of Finance Commission. So इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज scheduled area. In which of the following article provision of national emergency is mentioned? Article 356, 352, 360, 365. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 352. The impeachment of the president can be initiated in only Lok Sabha, only Rajya Sabha, in either houses of parliament, Supreme Court. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन आइदर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।